भी एक दफा अभी तो बाजार जाते हुए इंसान को डर लगता है। क्या जी पैरोटिड है। एक तो आपको ये डक्ट्स नजर आ रही है, एडिपोज टिश्यू ज्यादा नजर आ रहे हैं, और उसके बाद आपको जो नजर आ रहे हैं दीज आर द एल्वियोलाई आर द एसिनाई, दीज आर द सेप्टा और द ट्रेबिकुली डक्ट्स, और इसमें दीज आर द सीरस टाइप ऑफ द एल्वियोलाई, द डार्क स्टेन विद द नैरो ल्यूमेन, dark stain with the narrow lumen formed by the parental cells. Only one type of the alveoli, these are called the serous alveoli, and the numerous adipose tissues are visualized. The ducts are visualized and the septa visualized. Side of the parotid gland. In the parotid, only one type of the alveoli. These are the serous. That's visualized, and the two types of the alveoli, और इस दो types of the alveoli में जो है ना आपको क्या नजर आते हैं, the mucus and the serous. The serous these are dark stained, the mucus ये mucus है, ये देखो, these are light stained. Light stained है और उसके अराउंड के टेनिड्यून बनेगा by the dark stained, the septa और the trabeculae visualized. Two types of ये adipose tissue भी नजर आ रहा है. The slide of the submandibular or the sublingual gland, और उसमें ये जो आपको नजर आ रहे हैं these are the serous mucous alveoli. The light stained are the mucous alveoli and the dark stained are the serous alveoli. And denylune जो बनेगा वो किसके राउंड बनेगा, mucus के राउंड बनेगा, और किसके serous बनाएंगे. Half moon shape or the crescent shape denylune formed by the serous alveoli around the mucous alveoli, और ये होंगे half moon shape. सेप्टा भी नजर आएंगे और डक्ट्स भी आपको नजर आएंगे. दो टाइप्स के एल्वियोलाई आपको नजर आएंगे सारे, और उनको बड़े जो नजर आएंगे ये म्यूकस होंगे, और जो स्मॉल और डार्क स्टेन नजर आएंगे ज्यादा सीरस टाइप ऑफ द एल्वियोलाई. ऊपर से एक कैप्सूल है, उसके बाद पैरेन्काइमा, सारा पैरेन्काइमा में आपको सेप्टा और ट्रेबिकुली नजर आ रहे हैं, और वो सेप्टा डिवाइड कर रहे हैं जी उसको इनटू द लोब्स एंड द लोब्यूल्स, और उसके अंदर हमें ducts are visualized, two types of the alveoli, the mucus and the serous alveoli. वही फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स अगर सामने है बेटा लगा